Hello and welcome back to Dynamic Natural English. This is Dr. M.I. Nasir. I'm here with a new lesson in the series of tenses. This is 8th lesson based on future continuous tense. In this lesson, we will know how to use this tense while making our own sentences. Let's try to understand, let's know what are the situations, what are the contexts that we use this tense to express our actions or the actions we like to express. Number one, we use it to talk about actions which will be continuous or in progress anytime in future. In future, any action maybe will continue, will progress, will be going on at any time of future, and in this case we will use this tense. We have examples. It will be raining when we go to field. It will be raining. So this action will be going on in future. This action is expected to be on progress when we go to field. So whenever someone goes to field, this action will be on, it is expected. Now the next one, observe this sentence. We shall be reaching Kolkata by 7 a.m. So this action is also expected to be on progress, to be going on. Reaching Kolkata. Shall be reaching Kolkata by 7 a.m. So this is the first situation. This is the first situation when we use future continuous tense. Now have this second one. What is the situation that we use future continuous tense? In the second situation, tense is also used to talk about planned or expected actions in the normal course of things. In the normal course of things, any action will take place, will happen as it is planned. Try to observe the sentences given for examples. The teacher will be coming next week. The teacher will be coming next week. It is expected, it is planned. The teacher, maybe the teacher has planned to come to next week. So knowing the information, a person says that the teacher will be coming next week. The guest will be staying here till Saturday. So the guest has planned to stay. So he will be staying, will be used in future continuous tense. This is the planning. This is the, an action that has been planned by the guest that he will stay here. So the person who is telling says guest will be staying here, means the action will be in progress and it is expressed in future continuous tense. This is planned action. Planned, the guest has planned to stay. So stay till Saturday. Next sentence, the peon will be arriving soon. The peon will be arriving soon. This is future continuous tense, and this is already expected. The peon is arriving, so it will be he will be arriving in future, soon, near future, so it can be expressed in future continuous tense. The last situation is also very common, but most of the time people don't tell this situation to the learners.
how we use it. It is also used to talk about the present continuous actions if the speaker is not sure. The action is on in present only, but the speaker is not sure of the action if it is really on or not. For example, if the teacher is teaching in a class at 7 o'clock in the morning, somebody asked, "Where is the teacher?" The person will say he or she will be teaching in class 8th. But probably, possibly, someone may have called her, someone may have asked her to do something. For example, manager asked the principal to observe another class, and a teacher was teaching in a class, and the principal was asked by the manager to observe another class of the teacher who was teaching in class 9th. So the principal was in class 9th, but the person who told about the location of the principal was the possibility, just a possibility, the person has not seen it. If I tell you in Hindi कि अगर कोई काम हो रहा है लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि उसका इस टाइम क्लास में पीरियड होता है पढ़ाने का और वो वहाँ पे होना चाहिए, तो वो कह देता है कि हाँ वो उस क्लास में पढ़ा रही होगी, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह पे मैनेजर ने बोल दिया है कि दूसरे टीचर को वो ऑब्जर्व करे कि कैसा पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे नहीं है। तो इस केस में वो जब पॉसिबिलिटी या संभावना हो, श्योरिटी नहीं होती है, व्हेन देयर इज नो श्योरिटी, when the person who is answering, who is talking about a person is not sure about it, is not firm about it, so he will use future continuous tense. Example, the principal will be teaching in class 8th, but not sure, is not sure that he must be teaching. Observe the second one. The farmer will be plowing his field. I haven't seen the farmer, but I expect that he will be plowing field, because he was earlier he was talking about plowing field. वो पहले बात कर चुका होगा कि हमें खेत में हल चलाना है, और किसी ने पूछा कि भाई फार्मर कहाँ होगा, तो वो अपने खेत में हल चला रहा होगा. In this way, this type of actions will be told in future continuous tense. Now let's try to understand what are the helping verbs and main verbs to be used in future progressive tense. Now let's recap the situations again. दोबारा फिर से देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी situations हैं जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाता है. पहला, जब कोई काम ये पता चले कि फ्यूचर में जारी रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, ऑन प्रोग्रेस रहेगा, तब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. फिर इसके अलावा दूसरा, जब कोई प्लान्ड एक्शन हो, जब ये पता चले कि कोई काम प्लान्ड है फ्यूचर में होने के लिए, फ्यूचर में उसको होना है, तो उस कंडीशन में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं. जैसे वो अगले सैटरडे तक यहाँ ठहर रहे होंगे या रुके रहेंगे, इस तरह से कंडीशन में हम उसको यूज़ करते हैं. जैसे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है उसी में कि पोस्टमैन जल्दी ही आ रहा होगा, पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. तीसरी और आखिरी सिचुएशन ये होती है कि जैसे कोई काम कॉन्टिन्यू प्रेजेंट में है, बट बोलने वाला कंफर्म नहीं है कि ये काम वाकई में हो रहा है या नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा हो रहा होगा, यानी श्योरिटी ना होने की वजह से भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं. जैसे
ये टाइम है कि क्लास में टीचर पढ़ाती हैं, 8 बजे क्लास 9th में एक टीचर पढ़ाती हैं, तो उनके बारे में किसी ने पूछा तो हम क्या बताएंगे कि वो टीचर उस क्लास में 9th में पढ़ा रही होंगी, क्योंकि हमने देखा नहीं है, उनका टाइम है, इसलिए हमने बता दिया। तो इन 3 सिचुएशंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम यूज़ करते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं इंग्लिश में, उसको देख लेते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मेन वर्ब जिसको एक्शन वर्ड्स कहते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब में विल बी, शैल बी को हम यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म, बेस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। और आईवी के साथ में शैल बी को यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ में विल बी को यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि जिसमें हम कोई बात बताते हैं, पूछते नहीं हैं, बताने वाली बात को कहने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, शैल बी, विल बी। तो शैल और बी के बीच में अगर नॉट है तो नॉट को बीच में लगाते हैं, ही शैल नॉट बी, ही विल नॉट बी। बी और जो उसके पहले शैल या विल जो भी होता है, दोनों के बीच में अगर निगेटिव सेंटेंस तो नॉट को हम रखते हैं। उसके बाद फिर मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव, इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है अगर, यानी कि किसी बात को सकारात्मक तौर पे बताना है, बिना नॉट के बताना है, तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं, और निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, उसमें नॉट हम लगाते हैं। तो उसी में ध्यान रखना है कि नॉट दोनों के बीच में आएगा, यानी शैल विल बी के बीच में नॉट आएगा, यानी शैल और बी दोनों है तो इसके बीच में नॉट को हम रखते हैं। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के इंट्रोगेटिव्स होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का जो इंट्रोगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल में से जिसको भी हम रखेंगे उसको सबसे पहले रखेंगे, बी को नहीं, बी को बाद में ले जाते हैं। विल या शैल को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर है तो वहाँ पे आएगा, नॉट के बाद फिर बी, बी के बाद फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव। ये फॉर्मूला तैयार होगा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव्स के लिए। विल यू नॉट बी going to school? Will you not be going to school? Will he not be going to school? Will they not be going to school? Will they be going to school? Will they be reading a novel? Will she be reading a novel? You can make your own sentences on the basis of the structure when you want to ask a question with helping verb. इसके बाद क्वेश्चन वर्ड से जो बनाए जाने वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड को और ऐड कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को रख देना है। स्ट्रक्चर आपका तैयार है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल? आप स्कूल कब जा रहे होंगे? तो बताने वाला कह सकता है आई शैल बी गोइंग टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हम सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे होंगे। In this way, we have completed this tense, future continuous tense. After that, you will have some lessons on practice. Practice पे हम कुछ लेसन लेके आएंगे। प्रैक्टिस पे हम आपको इस टेंस के बाद प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो बोलने के लिए प्रैक्टिस होगी अभी, और उसके लिए हम लेसन लेकर के आएंगे। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स, ये सब हमारे लिए हेल्प करते हैं, हमें बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश एक प्रोसेस से होकर के इसको जाना पड़ता है, तो एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और इसके करने के लिए हमें अच्छी वीडियोस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुंचाएं, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, रिलेटिव्स को बताएं, so that we will be motivated to make more videos for you in future. And thank you for watching. Don't forget to share, subscribe and like it. Thank you.